ओ हो, इतना एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगा भाई? इतना इतना वैल्यू फॉर मनी किधर मिलेगा? क्या बोलता है मानस? कितने बाल सफेद हुए लास्ट के 10 मिनट में? भाई स्ट्रेस तो अलग ही लेवल हुआ निधि के मैच में। भाई बहुत भाई स्ट्रेसफुल मत, था यार ये खास लाइक करके लास्ट का 10 मिनट तो भाई दिमाग खराब हो गया मेरा, मतलब मैं क्या बोलूं। ओ हो, बट मतलब एक एलिसन एंड मिलनर बचा लिया। हाँ वो एंड में तो ट्रेंट डिड जज द बॉल एंड देन मिलनर और एलिसन एलिसन ने फर्स्ट हाफ में भी पेनल्टी लाइक निधि ये सीजन तो एलिसन लास्ट एक दो सीजन एलिसन ने कितना बचाया अपने को यार मतलब हद पार हो गया वो। निधि वो उसका बंदा असिस्ट दे रहा है, वो गोल मार रहा है, वो पेनल्टी सेव कर रहा है। तू समझ रहा है हो क्या रहा है मतलब एलिसन तो मतलब कम सब कुछ कर एक रहा है हमारे लिए यार। एक वो ऐसा खैर छोड़िए, दिमाग में एक आया है, इसका मीम डालूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। मीम डालूंगा ताकि अपने को कुछ उसमें उससे भी फायदा हो। बट बेसिकली मिलनर मिलनर भी भाई, मतलब एलिसन तो खैर है ही, बट हाँ मिलनर भी एंड में यार कंपोजर, मतलब बहुत ही। बट यू नो व्हाट भाई, ऑनेस्टली आई न्यू कि आफ्टर दैट गेम अगेंस्ट सिटी ना, हाँ वैसा परफॉर्मेंस हमको इमीडिएटली नहीं दिखने वाला था। तो आई वॉज सॉर्ट, मतलब इतना एंड में तो खैर कुछ ज्यादा ही हैप हैजर्ड हो गया हेल्फर लेदर। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दिस इज इफ दिस इज गोइंग टू बी अ विन, इट इज गोइंग टू बी अ स्क्रैची विन 100%। हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और वही था मतलब सिमिकास का बॉल डार्विन नुनेस का गोल like it looks great on paper but overall we were far from great Nidhi I think पूरे गेम में हाँ, वी वर नॉट even नॉट like but there's a part of me जो बहुत खुश है कि अपन ऐसे गेम भी जीत गए। वही, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मतलब ये जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था, मैं मतलब इट वुड नॉट हैव बीन सरप्राइजिंग अगर साला एंड में 2 गोल खा जाते हम लोग। हाँ वही लेकिन मतलब स्पेशली वो जो एंड वाला जो चांस था, जिसके बारे में तूने भी बोला कि ट्रेंट ने जज नहीं किया, अरे माँ कसम भाई, वो तो मतलब मैं सर ऐसे पकड़ के बैठ गया था कि गया, गया, हार गए, मतलब ड्रॉ हो गया। बट वो एलिसन ने, मतलब व्हाट अ ब्लॉक, मतलब उसी को थैंक यू बोलो सबसे ज्यादा, उसी ने बचा लिया। वी वर फार फ्रॉम आवर बेस्ट, बट एक बात मैं बोलूं, मैं डार्विन न्यूनेस के लिए बहुत मैं खुश हूँ। एक एक सुपर चैट मेरे को लेना है भाई। यार अनुराग, द थिंग इज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज, यू ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। यार वो थोड़ा आप, मतलब जो तुमने लिखा था ना कि मतलब जो भी नितिका वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी स्वीट। बट व्हाट यू हैड उसके बाद जो लिखा था ना, वो उसको वो थोड़ा मतलब ऑकवर्ड कर सकता था, इसलिए मैंने आपका सुपर चैट नहीं लिया। You were not being disrespectful at all, I know that, but it can make girls a little uncomfortable when you say things like this, especially when they are on a podium and they're expected to say back something. So और कुछ नहीं, बाकी no problem यार, thank you for your support always. हाँ, हाँ, मानस क्या बोल रहा था तू? uh, nothing I'm sorry I'm just taken aback by what was just happening right yeah I'm happy yeah Joe Gomez bro again मैं गेम देख रहा था जो गोमेज वंडरफुल वंडरफुल मींस वंडरफुल भाई लास्ट दो गेम जो गोमेज देख क्लीन शीट हमने निधि ये पूरी सीजन क्लीन शीट ना एनॉमली रही है हमारे लिए और फिर बैक टू बैक क्लीन शीट रखना हम तो पहले निधि ये बोलते थे ना पहला गोल नहीं खाना है उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या होना है ब्ला 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 लास्ट दो मैच हाँ, में क्लीन शीट रखी है अगेंस्ट डिसेंट टीम्स भाई और जो गोमेज हैज बीन वंडरफुल हम्म,
एब्सोल्युटली वंडरफुल मेरे हिसाब से निधि, लाइक। मेरे को और और और, ऑनेस्ट और उस दिन मैं देख रहा था, मार्क गोल्डब्रिज और एक दो लोग बोल रहे थे भाई कि अगर जोकोविच ऐसे खेलेगा उसको वर्ल्ड कप ले जाना चाहिए। अगर अगर ऐसे खेलते रहा, मतलब इफ ही कंटिन्यूज प्लेइंग लाइक दिस, देन डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। बट मेरे को लगता है कि अभी हमको थोड़ा सा और रुकना चाहिए जो गोमेज को के बारे में मतलब बात करने से पहले, थोड़ा सा आई जस्ट फील कि क्योंकि आज भी ऑनेस्टली अगर वेस्ट हैम ने वो पेनल्टी मार दिया होता, तो वी वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट जो गोमेज इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। दैट वाज वेरी ऑकवर्ड फ्रॉम हिम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ना जो गोमेज, आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम एट ऑल भाई, आई थिंक अच्छा खेला वो। आई जस्ट फील दैट ही नीड्स अ लिटिल मोर ऑफ दीज गेम्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर दैट पेनल्टी विच आई थिंक वाज अ पेनल्टी, बट आई जस्ट थिंक कि थोड़ा सा उसको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर हिम टू बी रियली कंसिडर्ड फॉर लाइक एन इंग्लैंड कॉल अप और समथिंग लाइक दैट। हाँ मतलब वो पेनल्टी डिसीजन, यार वो, आई आई एग्री नहीं थे सर, लाइक वो पेनल्टी तो था 100%, हम्म। बट irrespective of everything that happened, I think Joe Gomez had a very good game. Like, हाँ। uh, he, again, you know, like it's very easy to forget the other things that he's done great in the game. मेरे हिसाब से जो गोमेज बहुत अच्छा खेला, हम्म। सिमिकास भी अच्छा खेला, मिलनर जब आया he was good, yeah. But then again मेरे को निधि वो फ्रंट थ्री का शेप थोड़ा अजीब लगा आज। अजीब तो था ही, अजीब तो था ही, मतलब वो समझ नहीं आ रहा था एक टाइम पे कि कौन क्या कर रहा है, किसका वही। रोल क्या है। हैविंग साला सेड सो, ज्यादा involve नहीं हुआ आज निधि, तूने देखा रहेगा आज। द ओनली इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम साला केम आफ्टर नूनेज वेंट ऑफ और साला बीच में चले गया। Exactly, दैट्स द ओनली exactly. टाइम साला का। बट वही है कि भाई देख, वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस। नूनेज आज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर डार्विन नूनेज। he almost scored like two worldies, and एक तो गोल खैर उसने मारा ही। पहला जो वॉली था उसका, ओ हो भाई वो बॉल क्या वेनम के साथ हिट किया था। डू यू आई सेंट यू अ वीडियो आल्सो, हाँ डिड यू सी हाँ, दैट? yeah, of course, yeah. आई थिंक kudos to Fabianski for reacting, but that ball, if that वो गोल होता ना, it could have been one of the goals of the season अगर वो अंदर जाता था। Hmm. क्या गजब का वॉली था ब्रो। डार्विन ब्रो, मैं भी बहुत खुश हूँ यार। आई थिंक उसको ही नीड्स अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट, लाइक। और आई थिंक ये जो था ना, ये जो गेम था, ये जो गोल था, ये जो विनर था, इट इज गोइंग टू गिव हिम दैट, आई फील लाइक। ओवरऑल परफॉर्मेंस निधि डजंट गिव मी द कॉन्फिडेंस बूस्ट, बट जो डार्विन नूनेज ने किया मेक्स मी हैप्पी, बिकॉज if you get what I'm saying, because overall there are so many signs which I feel कि हम लोग better कर सकते थे। डार्विन न्यूनेस को 57 58 मिनट पे निकाल दिया, if I'm not हाँ हाँ, wrong। उसको हाँ 50। हाँ, वही। तूने भाई जो करना था कर दिया, आ जाओ अभी आप बाहर। वही। सर डार्विन न्यूनेस के लिए बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज पहला गोल एनफील्ड पे नहीं थी, इन द कलर्स ऑफ लिवरपूल। बेंफिका के लिए तो ऑफ कोर्स उससे मारा ही है एट एनफील्ड, बट इन द कलर्स ऑफ लिवरपूल पहला गोल। और हमने यही बात किया था कि थोड़ा वो डेस्परेट है एट टाइम्स गोल मारने के लिए, बिकॉज वो पैलेस वाला जो रेड था निधि, उसके करेक्ट। बाद थोड़ा ट्राइंग टू हार्ड वाला फीलिंग था। और निधि, आई डोंट रिमेम्बर अ लिवरपूल स्ट्राइकर स्कोरिंग अ गोल द वे ही हैज। ये जो हेडर था आज, लेफ्ट से क्रॉस आया, कंटेस्टेड हेडर। फर्मीनियो ने गोल मारे हैं, जोटा ने गोल मारे हैं, बट ये जो कंटेस्टेड टाइप हेडर था ना, बहुत बहुत कम हुआ है ऐसे हमारे लिए इन रिसेंट इयर्स। सो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा टाइप का गोल हमने मारा, ऐसा टाइप का गेम हमने जीता भाई। 100% यार, आई थिंक। और वो यार देख, वो नूनेस का एक क्वालिटी है, और सादिक भाई भी वही बोल रहे हैं। लिवरपूल डिफेंस स्टिल लुकिंग क्वाइट शेकी। हाँ हाँ, डेफिनेटली वी लुक्ड शेकी। आई जस्ट थिंक दैट मैच जैसे जैसे खत्म होते गया ना, वो हम लोग मतलब आई आई
गुड पार्ट वाज कि मैच में गोल मार दिया था, बिकॉज अगर 0-0 होता ना तो वेस्ट हैम वुड हैव, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा 100%. बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता। एलिसन के बारे में क्या बोलेगा ब्रो? अगेन अ पेनल्टी सेव, अगेन एलिसन द सेवियर, एलिसन के रनिंग बारे आउट में ऑफ रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स फॉर दैट मैन। वही आई विल बी बैक इन अ सेक। मैं हिंदी में वही बोल रहा था, जितने जितनी चीजें बोले वो कम ही है भाई, रनिंग आउट ऑफ वर्ड जो तूने इंग्लिश में बोला। एलिसन मतलब पेनल्टी सेव, एंड में लास्ट लास्ट मिनट इन द रेगुलेशन टाइम सेव, the calmness that he provides, crosses पे, his distribution. Alisson साला assist करता है, 3 assist किया है, penalty saves करता है, गोल मारता है, और क्या चाहिए हमको एक गोलकीपर से? मैं ये सोचता हूँ, Alisson is one of the reasons why Liverpool are where they are, मेरे humble opinion में। 100%। और आज भी एलिसन ने जो परफॉर्मेंस दी है इज अनबिलीवेबल यार। मतलब ऐसा गोलकीपर बहुत कम टीम्स के पास है जो आपको असिस्ट भी कर सकता है, गोल भी मार सकता है और सेव्स भी। या आई जेन्युइनली फील एलिसन इज like he was one of the reasons why we won the game today, if not the most biggest reason why we won. 100%। Yeah, i हाँ think we I think we joined Kennedy. हाँ हाँ। Yo. Hi guys, can you hear me? Yeah. Loud and clear. You can hear me, yeah? Yes. How was Good man. Anfield? Yeah, man, I'm good. Just left the stadium now. Sorry, boys. Just wait. Just bear with me 1 second. No Take your worries. time. So Sajad has just joined us right from outside Anfield. तो यार सजाद भाई अभी जस्ट मैच देख के आए एनफील्ड में, और उनका खुद का चैनल है, उसको हम लोग लिंक कर देंगे। अभी तो हमने जल्दी जल्दी में बस बना दिया लिंक, तो इसके Just बाद bear हम with me लोग 1 second. I'm just having the voice isn't clear. Yeah, take your time. Take your time. Take your Nidhi, time. if you can mute him for a second, if Yes. so till then, Nidhi, you can say his channel wala thing. सो सजाद भाई का चैनल है यार, बॉर्न एंड रेड, BORN&RED। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, प्लीज आप लोग जाके सब्सक्राइब करो। सजाद भाई विल be here for some time with us, so he's just watched the game at Anfield, so it'll be good to hear from his perspective. तेरे को अगर कार्वालियो तेरे को अभी अगर उसमें डालना है, डाल दे निधि, किसमें? टाइटल। चलते स्ट्रीम में कैसे डालूं? अच्छा, मगर possible. हाँ, मगर Nidhi, I'm gonna come back. Okay, I'll come back. Sure. नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। मानस, कार्वालियो के बारे में क्या बोलेगा? भाई निधि, जब भी कार्वालियो खेलता है ना ब्रो, मेरे को कंपोजर वाली फीलिंग आती है। हाँ, उसका कंपोजर इज वेरी गुड। आई स्टिल फील देयर आर फ्यू थिंग्स इन हिज गेम दैट ही नीड्स टू डू बेटर, जैसे इन टर्म्स Like, ऑफ लिंक अप प्ले। मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज समवन हु कैन ड्रिबल पास प्लेयर्स वगैरह, बट मेरे को ऐसा लगता है लिंक अप प्ले उसका थोड़ा डेफिनेटली बेटर हो सकता है। आई मेरे को आई उसको बट उसको हम लोग थोड़ा अनफेमिलियर पोजीशन में आज फिर से हम लोग ने खिलाया। मिडफील्ड में खेल रहा था वो। मेरे को उसका लिंकअप प्ले परफेक्ट लगता है। लाइक मेरे को तो लाइक आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दिस लिंकअप प्ले। लाइक No, I'm not saying there is something wrong with it. I'm just saying that it can be, in certain situations it can be better. मैं नो, वही बस बोल। नहीं, मैं वही बोल रहा। लाइक आई थिंक कार्वालियो का व्हेन इट कम्स टू दैट, आई जनरली थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। I just feel he is there. He is he's absolutely amazing when it comes to that. Bhai, can you hear us? Can you see us? I can hear you. I can see you now, and I can hear you perfectly. All right. Okay. Saj bhai, can you tell us how was Anfield like tonight? Anfield कैसा था? Anfield was good. To be fair, look, I think at the second half you could see that when West Ham began to come into the game. वो गेम में आ रहे थे second half, and when we made the substitutions, हमने substitution बनाए ना, they started to I thought we lost a bit of the control in the midfield, and then they started to play a lot better.
but the atmosphere before the game was really, really good. Yeah, You'll Never Walk Alone was very good. The cop was in good voice. So it was a good atmosphere, but second half, the nerves started, yeah. The nerves really kicked in. They missed a penalty as well. And then obviously they had a few chances towards the end. And I think I missed the, I think मिलने ने block किया था final chance उनके लिए. नहीं, Sorry. so वो एलिसन और मिलर ने ब्लॉक किया था. अच्छा फिर ठीक है. Yeah, because I couldn't really see where I from was. I knew Milner got a touch, but I didn't know if Alisson saved it. Yeah, Alisson saved it as well. Yeah. Yeah, I'm just glad that we got the result. The most important thing था कि हमने for the next 3 games we need to get 9 points. That's the most important thing. We just need to get the results. The performances will come. We just need the results right now. Sir, how different was it आपके हिसाब से from the Manchester City game or performance? Yeah. Because Manchester City obviously was going to be attacking. We could afford to be little more defensive or on the back foot. Not that we were, but how different was this game against West Ham and Man City? Look, of course, it's going to be different. We put in a lot of intensity. We put in a lot of effort against Man City. So this game, there was always going to be a slight lack of intensity. Plus, it's 2 different ways of playing football. Man City play on the front foot. They like to have possession of the ball and try to create chances. Whereas I thought in the first half, they sat back. West Ham sat back. So we were going to get a lot more of the possession between the lines. हमें first half space मिल रहा था. Bobby और Carvalho, they got the space in the midfield. We created chances. I thought Nunez did really, really well today. He was unlucky that second goal when he hit the post. And then he had another couple of chances that fell to him on his left, on his weaker foot. Could have had a hat trick today. Yeah, and look, this is the thing with Nunez. You have to accept that it's going to take him time, but he gets into these chances, and his work rate today was phenomenal. He ran all over the park. Yeah. I thought he had a really, really good game. Look, he needs time. He needs in time he will become good. I have no doubt in Darwin Nunez के लिए उसकी ability or just the way he's molded as a number 9. उसके साथ हम सब attributed to be a fantastic number 9. But look, he needs coaching, he needs time, and I have no doubt that he will become good. दीदी नूनेस का आज जो हेडर था ना, मैं वही बात कर रहा था साजिद भाई की, मैं दीदी से बात कर रहा था कि ऐसा गोल जो हमने बहुत दिनों से नहीं मारा है. We don't really score that type of goal. It's been a long time. You're right, Menace. We've lacked a number 9 in midfield. We've lacked a real number 9. And it was a really beautiful, I think the way he cushioned the header down and right into the corner was a beautiful header. I was right behind it, so I managed to see it properly. But got to give credit to Tsimikas as well. It was a fantastic cross. Yeah. निधि वही सरप्राइज निधि दैट हमने सिमिकास के साथ स्टार्ट किया बिकॉज रोबो सिटी के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला निधि. मैं नितिका के साथ यही बात कर रहा था कि कितना सरप्राइजिंग है कि we didn't start with Robertson, but I think that Robertson's issue before this when he was like little bit out of sorts, उसने भी यही बोला था कि यार मैं थका हुआ हूँ. उसको उसने शुरू से बोला था कि मैं थक गया हूँ स्कॉटलैंड को खेल के, वो उसकी हालत थोड़ी खराब थी, तो वो मैनेज हमको करना ही पड़ेगा. मतलब वो I was a little surprised that Robertson did not start today, but I see why. मेरे को समझ आ रहा है कि क्यों Tsimikas को, और it is great that we have 2 players that we can play interchangeably. In a lot of positions we don't have this option कि अगर एक को हटाया तो दूसरा तो है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है. Nidhi, first to Nidhi, I want to ask this: how pleased Nidhi were you to see Curtis Jones play? यार मतलब तेरे को पता है मानस, वो उसको ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजों का तो मुझे सेंस भी नहीं समझ में आता कि क्यों उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर्टिस जोन्स परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ये इशू है, वो इशू है, मैं मानता हूँ सारी चीजें, बट आई स्टिल फील दैट कर्टिस जोन्स
काफी अच्छा प्लेयर डेवलप हो सकता है हमारे लिए और बहुत अच्छा खेल सकता है। और आज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमने देखा कि उसका लास्ट मोमेंट में जब उसने वो कंपोजर दिखाया बॉल रखने के लिए, ही वाज नॉट, वो नहीं था कि लंप द बॉल फॉरवर्ड, नर्वसनेस वाला, एंड देन हम्म प्रेजेंट द चांस टू वेस्ट हैम टू कम बैक एट अस। आई वाज वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। अगर अगर कर्टिस फिट रहता है ना तो आई कैन सी हिम प्ले। सबरा, व्हाट डू यू थिंक भाई कि कर्टिस प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन? आपके हिसाब से व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड टू सी हिम कम ऑन एंड देन द वे ही प्लेड? Look, personally, I like Curtis Jones as a footballer. I really like him. I think he has all the attributes to become a very, very good footballer. Technically, he's a very, very good. He has all the attributes. It's just he needs a few tweaks in his game. आपने देखा होगा कि he sometimes dwells on the ball too much and he loses the possession. And these are aspects of his game. उसको improve करना पड़ेगा. But I'm so happy that he's back because Diaz भी नहीं है, Jota भी नहीं है. So it's imperative that he takes this chance now. This is his chance, and I believe this is his last chance. He has to produce this. उसने produce करना है अभी, because this is his chance to really now become a Liverpool player. Plus for Curtis it was a bit hard because वो youngster था, वो 10 में खेलता था. फिर हमने उसे try की because we had the front three. Then we tried to mold him into an offensive attacker offensive midfield role, and then it takes time for a young boy to come in, change karna apni game ke liye, especially playing for Liverpool. But he has a very, very good ceiling. He's got the technical ability, and he's really, really good on the ball. You don't see many English players in the midfield. Maybe Foden hoga or Harvey's good in that role, but who can happily receive the ball, start to make the play. He has a ceiling. लेकिन हमने consistency नहीं, we haven't seen inconsistency enough. He's had the chance, and plus injury के साथ वो किया that eye injury last year, अभी injured था, but now he really needs to take this chance that he's gonna get. मैं वही बोल रहा था सजाद भाई। आई वाज स्पीकिंग विद नितिका बिफोर दिस, शी वाज ऑन द चैनल, that as harsh as it is, I think that time is running out for Curtis a little bit at Liverpool, and it's not exactly fair, nor is it Curtis की गलती नहीं है, बट थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है ना कि टाइम उसके हाथ से निकल रहा है। एक चैट आई है, वो मेरे को कंफर्म कर एड्रेस कर लेने दो। AB says we need to sign a world class right back and two proper midfielders if we are serious about winning some silverware this season. See, we have a world class right back. His name is Trent Alexander Arnold. He's not having the best of the seasons. That is also true. But um, I just think that this is a season. Look, he's just 23, and again, I'm not going to sit here and say that he had an okay performance today or this season, in fact. But I just feel that this whole thing of writing Trent off is getting a bit too much. I still think he's one of the best right backs in the world. Midfielders completely agree. I'm saying three. I'm not saying two. But three players in one window is going to be tough, especially winter. बहुत बहुत टफ होगा वो लाइक 3 साइन करना तो बहुत टफ होगा, बट देखते हैं यार। अभी लाइक निधि, हम तो यही वीडियो के पहले हमने बोला था 8 बहुत मैसिव गेम है, 5 प्रीमियर लीग में, 2 चैंपियंस लीग में, 1 लीग कप में, वर्ल्ड कप के पहले अभी 7 हो गए हैं, 1 जीत गए, 4 games now in the league, 2 in the Champions League, 1 in the League Cup. One thing which I take away from this game personally, Nidhi, is that we saw a lot of people play we haven't for a while. Like Curtis played today, Gomez got another 90 minutes, and I'm so happy with Tacha खेला, Simikas खेला, Robbo खेला, Trent आए इंजरी से वापस। सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई ये सीजन, which is to see Naby Keita play और ऑक्सफोर्ड चैम्पियन पे। वो पता नहीं कब होने वाला है या होगा भी नहीं वर्ल्ड कप के पहले, बट यार डार्विन न्यूनेज ने गोल मारा है। बट सदत भाई, आपको क्या लगता है कि आज थोड़ा अजीब था द फ्रंट थ्री? वाज इट लिटिल वियर्ड फॉर यू? बिकॉज व्हेन वी वर सीइंग नूनेज, फर्मिनो एंड साला, इट डिडंट फील एज फ्लूइड from obviously we're watching on the television, but at Anfield, did it look fluid for you?
Look, in terms of minute I thought they did first time. I thought we did well. Look, when Salah was playing very wide today, obviously because Nunez started and Bobby Kerr left, so he was slightly a lot more wider than normal. But I thought in between the space we did well. If we're expect करें कि ये both they're going to create triangles, start having the 1-2 movements, वो नहीं था आज. I'll be honest with you, but it takes time. Do you understand? This chemistry of these players will take a bit of time. But we created chances. Salah had a couple. Nunez had at least 3 in the first half. So we do create chances with this side. But it will look time, especially in this Liverpool side. We will need time. I think we lost the control when I was messaging the group and I said as soon as the 3 substitutions were made, I knew this was going to be a next half an hour hard hoga. Because I could feel we lost Thiago, who's our controller, who is our orchestrator in the midfield. So when you lose that, I felt you had to keep Nunez on because Nunez wo channel dorta hai. Plus he makes the opposition defense. He drives them back another 10 yards. Whereas Harvey Elliott and Jones, they need on the ball. They want the ball to their feet. They can turn on the ball and then try to make the play. They're not really going to run in behind. Whereas Salah was the only person that was number 9 that could do that. आज क्लॉप का बिहेवियर कैसा लगा आपको? Because ये मतलब ये तो मेरे को पूछना है because आज मेरे को थोड़ा क्लॉप सबड्यूड लगा टच लाइन पे because well after what happened in the Man City game थोड़ा सबड्यूड ही होना था यार उसने यार वही because आज तो कुछ लगा नहीं वो पागल हो रहा है but from where you were Klopp थोड़ा because you go to Anfield every week every game so आज Klopp थोड़ा अलग था कि नहीं या मतलब to be fair, he was not as vocal, let's say, as normal. I was actually in L5 in that house. Yeah, so I could really see everything. I really could see today. I wasn't in the cup today, and because my friend wanted the ticket, so I gave it to him, and I sat in L5. वो Klopp के साथ ही more or less होता है, and he was a bit not quiet, but it's not what you saw against Man City, let's say. Yeah. But if after everything that's happened, I think sometimes with the red card and everything, I think maybe अच्छा था कि उसने थोड़ा that easy take किया आज. We don't want another red card, yaar. That's a 4-5 game ban. हमें नहीं चाहिए वो. Exactly. Manas, Sajad bhai, Manas, what did you guys think of the penalty? Do you think it was a penalty? हाँ जी मेरे हिसाब से तो था. When I saw it live, I said penalty. Because it was as soon as he did it, I said to my friend, stupid Gomez, what are you doing? I felt as though there was no need for it. After full dekha, मैंने replay नहीं देखी, but it looked stupid to me. There was no need to jump in like that. Very clumsy, and thank God for Alisson, right? I mean that guy. Our player of the season, man. Sajad bhai, so Manas and I have been talking. I've said Alisson was our player of the season last season as well. I would honestly rate Alisson above everybody last season. Because Alisson brilliant था throughout the season. तो मतलब Alisson तो खैर क्या ही बोल सकते हैं. और निधि अगर देखो याद अगर सदर भाई आप तो मतलब स्टेडियम में थे बट कमेंटेटर ने बोला ही इज गोइंग टू गो टू एलिसन्स राइट बिफोर उसने पेनल्टी लिया लाइक 5 सेकंड्स और वो एलिसन के राइट पे किया और एलिसन ने सेव भी किया मतलब लाइक इट जस्ट फेल्ट सो वियर्ड बट एक कॉन्फिडेंस होती है एलिसन के साथ यार गोल में लाइक वो कुछ भी कर सकता है लाइक ही कैन लिटरली सेव अस from any situation and he did that once again and at the end as well यार हमें गोल कंसीड करना ही था बट उससे वो जो पॉइंट how he helps us save us from that situation I think it was brilliant. Salah was a bit unlucky. He was looking sharp. I don't know. I Mohammad Faraj ji I don't think we gave him enough opportunity to look sharp in this game. ऐसा लगा मेरे को ऐसा लगा कि Salah was not in those positions enough and वो Salah की गलती नहीं है. He was away from the goal. He was away from the goal. I think was it in the first half? I think he had a couple of snapshots
just inside the box, which I thought maybe one of them or left. It was on his left foot. I thought maybe he could have done slightly better with that one. Sorry, are you guys there? I'm here, Nidhi. I'm here. Sajad bhai, can't hear you. Sajad bhai, can't hear you. Can't hear you, Sajad bhai. We can't hear you. We can't hear you. No, we can't hear you. We can see you. We can't hear you. आपका माइक ऑफ है सजाद भाई आपका You're माइक on ऑफ है mute. No, we I still think can't. maybe try to rejoin. Try to join us again, Sajad bhai, if you can. Yeah. But मानस तेरे हिसाब से हाँ नाउ देख अभी अभी जो रन ऑफ फिक्सचर्स आने वाला है अभी चल सिटी को तो हरा दिया, वेस्ट हैम को हरा दिया, अभी फॉरेस्ट है, उसके बाद दूसरे गेम से सब कुछ है. हाँ तेरे हिसाब से ये नूनेस का जो अभी आई एम श्योर लाइक दिस वुड हैव calmed his nerves down a little bit at least. yeah. This is a big performance from Darwin Nunez according to me. I don't think a big performance, but a big moment for sure. नहीं बिग परफॉर्मेंस मतलब कहने का मतलब है कि ये परफॉर्मेंस के बाद अभी उसके नर्व्स थोड़े काम डाउन हो गए होंगे ना. हाँ वो स्पेशली वो गोल के बाद नहीं वो गोल के बाद तो आई थिंक आई वाज लाइक कि भाई ये तो कड़क गोल मारा है. कड़क गोल था बिकॉज द गोलकीपर हैड नो चांस. नो चांस. और वही बात है कि हमने ऐसा गोल नहीं देखा काफी टाइम देखा बहुत दिन से नहीं देखा. आई थिंक लास्ट ओरिगी के साथ ही देखा था इस तरह का गोल अगर हो सका तो. यार I don't mean to be weird, but मेरे को वो गोल मान में किसकी याद दिलाया? एंडी कैरल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. If you remember, एक क्रॉस था, एंडी कैरल ने हेडर मारा था, जो हार्ट गोल में था, और मेरे को वही गोल याद आया. और and I hate the fact because he's been compared to Andy Carroll as well. But the goal, Manas, you're spot on. Like I was at that game when Andy Carroll scored 2 in that game and Dirk Kuyt scored. I think when we beat Man City 3-0. yeah. And that goal, you're right. If there was Menace, like wasn't Andy Carroll ने goal नहीं किया था. It's exactly like 2.0 of that goal. Even you felt like that, right? Because I did. Yeah. So we were just talking about how Sajad bhai, how important it would be for his confidence, because he had scored 4 goals before this, but none at Anfield in the colours of Liverpool. So we're just trying to think about how someone like a Darwin Nunez will react to this, because it's not been a pleasant start. Let's just say to that in the colours of Liverpool. I mean, we could hear the cop say Nunez. We could hear it. And we are seeing the cop just being trying to help him out in a way. Like Manas, so you look at Nunez, and I was looking. I know his stats, and people can say stats can be very misleading at times, but his goals to minute ratio is very good. Achha. So yeah. he needs time, and he came into the side when we have not been doing great. He was stupid to get that red card. He missed them 3 games. Take care. So you have to persevere with him. We have to change the way we play. Liverpool have never played with a traditional line. We've never played with a traditional line over the last 3 or 4 years. So it's not just Nunez that needed to change. It's also the team have to need to change their way of play. So it was always going to take a bit of time for the whole team to understand, and for Nunez to understand. But I have no doubt in his ability and how good he has a very, very high ceiling. He's still very, very young. देखा था जब Suarez हमारे लिए first came, he was missing a lot of chances. He wasn't scoring as many goals. So, but he became a monster. And yes, I can accept they are different type of players. But the South American grit is there. He's got. I want to see that animal in him, because he gives us that strength at times when sometimes you need a man when the game is going against you. You need something like this. So look, we have to just be a bit patient with him and understand.
And look, the loudmouth football, you mentioned Henderson. And before I go, Manas, I just want to say Henderson's contribution in this game was massive. Defensively, he was intercepting a lot, well positioned, energetic, and created a good line of supply, a good line of supply as well. Glad to see our midfield did a lot. I thought Henderson was fantastic today. Um, he broke up play. He was very good in midfield. He was very disciplined in midfield. He knew when to press. Yeah. He urges the team on. Henderson hota hai. Do you understand? And I know he will get a lot of stick, but in the six, he's a very, very good player. So I want to give credit to Henderson today. Exactly what actually Manas तेरे को पता है Nitika also said the same thing. I was of the opinion that Henderson should not play today and we should play Thiago and Fabinho. But looking at Fabinho and uska cameo, I'm glad Henderson played because Before you Sajada, before you leave, I just want to ask how, because we are so far away ना, हम तो बहुत दूर हैं एनफील्ड से और हमारे गेम से. The general opinion of people online is that, oh, we can do without Henderson, online at least. But Anfield, what was it like? How was it received? How was his performance received? Because you get what I'm saying, na? Because बाहर तो लोग Okay. कितना कुछ बोलते हैं. I will give you an explanation, Manas. I'll give you an honest explanation. You know, the match day going fans jate hain na, they are completely different to the online fans. I will tell you this now. We are whereas we are Liverpool supporters, so we will always support the team through thick and thin, hard times, good times. When our players are going through bad times, they were singing Jordan Henderson's name today. Yeah, Not once. I heard that multiple times. Yeah, yeah. So we respect Henderson, what he brings to the side, what he brings to the club, not just the side, what he brings to the club. And you know, you have to. I know he's limited in technical ability. He's limited in certain abilities, but what he brings to the game, what he brings to our side, not many. He brings leadership, and leadership, Manas, is you can't put a price on leadership. Because you look at Manchester United, you know, they had the Pogbas, the Freds, all these very, very good, amazing players, but they never had a leader who could tell their players what to do, when to do it, how to do it. And the Anfield crowd, I'll be honest with you, we really like Henderson. Yes, we know he can't play the 8. We know this. He's not a number 8 anymore. He is a 6. He should be playing the 6 role. He's not a attacking 8. The 6 is his role, which he will interchange with, let's say, Fabinho, and at least we've got a ample replacement हमारे साथ है. And Fabinho's been crap. Let's face the music this season. Everybody knows this. But at least हमारे पास replacement तो है ना. So look, you know, online, I'll be honest with you, it's a complete, and plus a lot of the match day going fans, they're not, you know, the people have had season tickets for 30 years. You know, I've been going for 20 years now. So we have seen the bad times. Yeah, we've been through all the heartache of every single eater, you know, over the last 20 years. And online, you know, these old generation, they don't probably have Twitter. They don't have the online platforms to talk about and slander our players. So I will not slander my players. Yes, if they have bad performances, I will call them out. Yes, because we're fans, we want the best for our football club. But we've seen the hard times. And I understand बंदे कहेंगे कि लेकिन अभी हम number 1, 2 में जा रहे हैं. We need to invest in the team. We need the best players. So let's stay at the top. And I understand that. I'm with that opinion that we needed players in the summer. We should have bought a lot more. We needed to revitalize the side because the side is, you know, we've gone through crazy years of, you know, it's like clowning Mike Everest 3 or 4 times and saying you are second. 1 year you're going to say, I'm tired now. I can't do it. And it feels like this was probably the year where I'm totally tired, where we needed refreshing. We needed a bit of, you know, oomph in our side. And let's face the music, we were not fully backed. And everybody knows, we were a one midfielder short. But January is a big time. We will have to buy because we have 3 leaving in the summer. So hopefully, you know, there'll be change amongst the Liverpool fans. Sorry, in the Liverpool players in January, and I think minimum 1 will come. I genuinely believe minimum 1 will come in January. By the way, सजाद भाई का YouTube चैनल जो है हम लोग डालेंगे लिंक में. नहीं, मैंने कर दिया लिंक. I have linked it. मैंने कर दिया I लिंक. appreciate that. So guys, so he is gonna be helping us out with match day content,
He's going to be joining us from Anfield, away from Anfield here and there once in a while, whenever he can help us out. But that being said, please do follow his channel for all original Desi Liverpool content as well, because Yes. yeah, he goes to games, and that's all that we want, right? We want content which is straight from Anfield, straight from the heart, and आप देख ही सकते हैं कि he's so passionate. So please do follow his channel. It is mentioned by Nidhi. Nidhi, तू कुछ बोल रहा था, यस, sorry. यस। नो, 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 मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वही चीज़ हिंदी में बोल दूँ कि सजाद भाई का चैनल है, तो आप जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। Like Manas said, Sajad bhai is going to be with us a lot more on this. He's going to provide us match day content देंगे हमको। So it is an absolutely amazing channel, but thank you so much, Sajad bhai. Will Now, not before hold I you go, for look, long. I just want to say thank you, Manas, to you and Nidhi. Look, you've been very supportive of me and everybody's out there. Please like them, share them, subscribe to their channels, get your friends, family to subscribe to their channel. They do an amazing job with ye kar rahe hain. Especially, look, it's difficult. It's easy for us. I'll be honest, brother. It's easy for us. It can be 1 or 2 o'clock in the morning for you guys. These guys stay up every day, every night. They provide you with content, and that's some dedication that these guys provide, and a service just so you guys have something to talk about. Everybody loves the game, so please, I just want to say thank you. These guys are doing an amazing job, especially in the subcontinent. And yeah, look, I will do my best to try and provide you as much, give you an experience which hopefully will be good for all of us. And we are all brothers in this. We all support Liverpool. And again, look, thank you very much, man. And Nidhi and Manas, great to have me. I'm really happy to have you No for worries. you guys to have me on. No Let's worries at hope all. this is a partnership which is longer than James Milner and Liverpool. And Definitely, man. James Milner is not leaving Liverpool. He's going upstairs, so he's here for a yeah, long time. upstairs. So Yeah, let's we want him to. Yeah, we want him to stay. uh, But thank you so much, Sajad bhai. No, no. Thank you very much, guys. I please You have appreciate a it. good one, please fly back home safely. I will do. Uh, I will and do. you have a good Mansfield, one. right? Mansfield. That's Man, no, I live close to Manchester, only 45 minutes. I'm not too bad. all right. All right. Please, Okay. please stay safe. Thank you so Yeah, I much, will do. and we'll Thank you we'll very have much, guys. Sajad bhai joining us from Anfield or nearabouts Anfield very very soon. Thank you very Thank much, you so guys. much, brother. Take care. Please do. Salam. His channel ka link is in our title. Is there in the title itself? Born and Red. Please go ahead and subscribe. And Thank you. subscribe Take care, and guys. take care, Sajad bhai. Take care. Bye bye. Nidhi, By the let's. way, हाँ आज निश की एनिवर्सरी आज। किस चीज की मैरिज एनिवर्सरी। आटे भाई साहब आपकी मैरिज एनिवर्सरी आप मैंने से नमक पे क्या कर रहे हो आप सेलिब्रेट करो ना लाइक निश भाई Nish bhai says, odd, odd fact of the day: Milner was on subs bench with Bobby Clark tonight. Milner has played a Premier League game with Bobby Clark, that Lee Clark and Newcastle. Nish bhai, जेम्स मिलनर ना इज द रेखा ऑफ फुटबॉल। वो फॉरएवर यंग है। कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है? तो रेखा ऑफ फुटबॉल बोलता है रेखा ऑफ फुटबॉल है वो कभी जेम्स मिलनर भाई, मतलब। बट मानस, अभी अभी अपने को फॉरेस्ट के साथ खेलना है, ठीक है? वो हाँ गेम है सैटरडे या संडे, वो भी देखना पड़ेगा कभी है। um, हाँ would you make any changes against Forest? या लाइक ऑफ कोर्स आई मीन देख मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो इंजरी लाके उसकी वजह से एक चेंज तो फोर्स्ड होने ही वाला है ऐसा कुछ Saturday को first game early kickoff. Saturday first game early kickoff is Robo us. is going to play that game for sure if you ask me हाँ, I uh, think so. Robert's going to play that game. Konate mathematically too early. Uh, Elliot is going to start that game if you ask me. It's going to be Fabinho, Thiago, Elliot. I think Hendo is going to be on the bench. I think the front three is going to be Firmino, Salah, Nunes, and Nunez. So तो Carvalho bench पे चले जाएगा. So I think थोड़ा दो तीन चेंज तो होने वाला. दो तीन चीज 100%. तो होने वाला है या एंड
Nidhi, last up we've won a hat trick of games, which has not happened this season. So, तो समझ रहा है like हमने रेंजर्स जीता है, फिर मैन सिटी जीता है, और फिर ये जीत गया, बैक टू बैक क्लीन शीट्स हमारे लिए बहुत बड़ी बात है निधि ये सीजन. सो मैं तो हाँ, मतलब वही मैं वही बोल रहा था कि इट हैज टू बी अ रन ऑफ 7 to 8 games for हाँ us to say कि बॉस अभी we can build on something. I या still think that there are a lot of performance wise अगर देखेगा तो इसमें मतलब issues हैं जो कि हमने at length discuss किया है यहाँ पे. हाँ And I think that वो better हो सकता है. But I still feel that we are not that far off from clicking. But it's still some ways. मतलब अभी अभी मैं इस परफॉर्मेंस के बाद ये नहीं बोल सकता हूँ कि ओ लिवरपूल ऑफ द ओल्ड आर बैक. निधि टेबल लगा ना, मैं टेबल ही देख रहा हूँ प्रीमियर लीग का. टेबल एक बार लगा, वी आर 3 पॉइंट्स बिहाइंड यूनाइटेड. आज चेल्सी ड्रॉप पॉइंट्स किया, आज स्पर्स ड्रॉप पॉइंट्स किया, यूनाइटेड तो ऑफ कोर्स जीता है. हम यूनाइटेड से भी तीन तीन पॉइंट ही पीछे हैं. Like all this doom and gloom, we are not that far behind, bro. हाँ मतलब अरे यार देख things can change very fast ना मतलब it takes like a good run of 3 4 game का good run it takes हाँ, for things to improve. sorry, uh, I just want to say like we are 3 points behind United. Okay, हाँ we are 4 points behind Chelsea. yeah 7 points behind City Tottenham and with a game in Spurs hand. yeah With a game in hand, it's yeah not it's not that, like obviously like if we had not won against Manchester City तो बहुत ही अलग होता. अभी 10 गेम में 16 पॉइंट है. For all you know, it could have been very different. But now we play Nottingham Forest next. hmm. United play who next? Chelsea. United play Chelsea Chelsea next. yeah So उनमें से someone is going to drop points. We're going to again inch closer यार. मतलब मैं वही बोल रहा था मानस कि पता है इट्स ऑल अबाउट गेट ये जो वर्ल्ड कप के पहले का जो टाइम है ना हाँ वहां तक वो हमको क्रॉस करना है और फिर होप करना है कि विंटर में थोड़ा क्लॉप को बैकिंग मिल जाए एंड वी कैन स्टिल मेक समथिंग ऑफ दिस सीजन. इट्स नॉट अ राइट ऑफ येट. of course मतलब it's ऑब्वियसली हाँ of course it's not. We are almost in the round of 16 of the Champions नहीं League. नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी जैसे बट इफ यू भाई ये आज ट्यूसडे नाइट है सॉरी वेंसडे नाइट है. तेरे को याद है मतलब व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट आर्सेनल नॉट लाइक लॉन्ग बैक लाइक इट वाज लाइक भूल जाओ ये सीजन प्रीमियर लीग छोड़ दो सिर्फ चैंपियंस लीग पे कंसंट्रेट करो. मैं बस यही बोल रहा हूँ कि वी आर इन द मिक्स. Yeah, of course we are, and we should definitely. यार मतलब मैं यही सोचता हूँ, जोटा और डियाज की इंजरी निधि इतने गलत टाइम पे हुई है ना. सही में मतलब इट्स जस्ट सो अनोइंग. It's literally so annoying, bro. Like if we had them right now, Nidhi, things would have been so fucking, sorry for my language, so different, bro. Like अरे व्हाट लैंग्वेज यार ठीक है ना थोड़ी ना हम लोग. मैं सिर्फ बोल रहा, things would have been so different. Like could have been flying right now, bro. या डेफिनेटली मतलब आई लाइक अभी honestly as cliched as it may sound हाँ बेसिकली अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट पे कंसंट्रेट करो उनको हराना है. फॉरेस्ट के बाद आयाक्स अवे है. ठीक है तो हाँ मतलब वही है कि मतलब नेक्स्ट गेम के बारे में सोचो और गेट टिल द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स. वही है मतलब प्रीमियर लीग में अगर तू फिक्सचर्स देखने जाएगा अगर अपने हाँ क्या है अपने फिक्सचर्स रुक मैं दोबारा वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ. इफ यू लुक एट आवर प्रीमियर लीग फिक्सचर्स क्योंकि चैंपियंस लीग में तो अपने पास दो ही बचे हैं आयाक्स एंड नापोली. yeah. नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स स्पर्स साउथहैम्पटन विला ये है अपना नहीं विला भी नहीं सॉरी और नॉटिंघम चार ही है ना, ब्रो. स्पर्स नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स स्पर्स साउथहैम्पटन ये 4 That's गेम खेलने हैं अपने को. हाँ
तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई भी गेम इजी होने वाला है इसमें, स्पेशली स्पर्स अवे तो इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बट फॉरेस्ट अवे भी इट्स नॉट गोना हाँ बी नहीं, दैट। कोई भी गेम प्रीमियर लीग में इजी गेम तो होता ही नहीं है, बट आई जस्ट फील दैट इफ वी आर एबल टू put out good performances from the players that we have available, and touch wood, hopefully no more injuries. हाँ बिकॉज आज कार्वालियो स्टार्ट किया, मैं सरप्राइज था बट आई वाज हैप्पी। हमने मैच के पहले आज आज ही जो वीडियो बनाया था वही बात कर रहे थे कि देख कार्वालियो खेल सकता है लेफ्ट में, हम लोग यही सब बात कर रहे थे। मिडफील्ड में शुरू किया लेकिन वो, बट मेरे को उसका कंपोजर बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से एलियट खेलेगा भी नेक्स्ट गेम, और ब्रावो खेलेगा, एक दो चेंज होंगे। अरे भाई ये सब तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। फिर और चल माने सब बंद करते हैं, 3 बज गए रात के। अच्छा 3 बजे क्या भाई? क्लोजिंग थॉट्स, फाइनल थॉट्स क्या बोलेगा? भाई नसीब जीत गए, थोड़ा लकी थे बट खुश हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं, एंड में तो काफी लकी थे। अभी कुछ अभी लाइक आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज वी विन वी ऑफ गेट कोर्स वी मनी। डोंट, ऑफ कोर्स वी डोंट। थोड़ा वी shortened the gap on Tottenham and even on Chelsea. But more importantly, back-to-back clean sheets. That is what we needed. Abhi, let's hope that we get another win against Forest. मैं खुश हूँ, और especially Darwin Nunez के लिए पहला गोल एनफील्ड पे, fifth goal of the season. बहुत ही Yeah, मतलब बहुत बड़ा वेट उसके शोल्डर से लिफ्ट हुआ। तो भाई बहुत मैजिक नंबर ऑफ पीपल वाचिंग अस 69। तो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, yeah. ठीक है? Please, आपको 69 का वास्ता, आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी बट जो भी देख रहा है यार, 3 बजे रात को, 3 बजे अगर 69 लोग भी देख रहे हैं यार, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। रात को सीरियसली 3 बजे अगर आप हमारे साथ जगे हुए हो, जेन्युइनली थैंक यू सो मच गाइस। ना ना ना, जेन्युइनली आई आई टोटली एग्री, इट मींस अ लॉट भाई। मतलब हम लोग तो बस फुटबॉल के बारे में ऐसे रैम्बल करते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। और सजाद भाई का चैनल अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वो लिंक में है, टाइटल में, लाइक कर दो। उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी कंटेंट बना रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, सो प्लीज डू लाइक दैट इज। बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, लिवरपूल कंटेंट हम लोग हमेशा बनाते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। चीयर्स एंड अप द रेड्स।